Bismillah. अच्छा तो we were solving this question जब class खत्म हुई थी. A satellite of mass m in a circular orbit of radius r about a planet of mass m. ठीक है. So planet का mass जो है it's m, capital M, and there's a satellite and it has a mass of small m. ठीक है. And it's in a circular orbit जिसका उन्होंने हमें रेडियस वगैरह नहीं दिया. they've just given us the value of gm. ठीक है. And for this planet the product of gm is 4.0 into 10 power 14 newton meter squared kg negative 1, where g is the gravitational constant. The planet may be assumed to be isolated in space. ठीक है. Part 1. By considering the gravitational force on the planet and the centripetal force, show that the kinetic energy Ke of the satellite is given by this expression. Achha, whenever you have questions like these where you need to prove something, ठीक है, आपने किसी formula को किसी और formula के साथ relate करना है, the first thing you need to do is you need to list the formulas, ठीक है, so that it's easy for you to visualize कि हो क्या रहा है. इन्होंने जो हमें और सबसे हमने फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट जाके देखना होता है कि which formulas are mentioned in the question statement. अगर हमारी question statement कुछ mentioned है, for example gravitational force, तो this is important, ठीक है. Centripetal force, this is also important. तो we need to look at these formulas. और हमारा जो तो हमारे पास जो formulas होंगे, it's gonna be gravitational force का formula, centripetal force का formula, and kinetic energy का formula. ठीक है. तो and we also have the formula of kinetic energy. So what we're gonna do is we know कि हमारे पास in the formula of gravitational it is we have masses, we have the constant and we have a radius. ठीक है. in अब centripetal force के formula पे हम बाद में आते हैं, पहले हम kinetic energy के formula को देख लें, because we have multiple formulas for this. We to find out which one we need to use, we're going to look at the kinetic energy का formula. इसमें we have a constant half mv square. m भी है, ठीक है, m is common in all of these formulas. The main thing we need to look at is कि यहाँ पे हमारे पास अब v square आ रहा है, which is something which we need to introduce using the formula for centripetal force. तो हम जाके अपनी centripetal force के formulas को देखेंगे, and you can see कि this formula mv square divided by r, इसके अंदर v square है, so this is the formula we're going to be using. So since it has v squared, so it's gonna be the formula for centripetal force which we're going to use is mv squared divided by r. Now all we need to do is whenever we have an orbit, it is a circle, so the source of centripetal force is the gravitational force. ठीक है. So we can just equate the two formulas. m v squared divided by r is equal to gmm divided by r squared. ठीक है. तो the first thing that's gonna happen is हमारे पास ना ये r कट जाएगा and we'll be left with ये हमारे पास उसी ये रह जाएगा. ठीक है. ये स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा. we'll be left with r on the left side. ठीक है. the next thing which is going to happen is हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है इसको. ठीक है. तो अब वी हैव एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम divided by r. This is like 90% of the kinetic energy formula. The only thing we are missing is 1 by 2. ठीक है. So if we introduce 1 by 2 on the left hand side, we're going to have to introduce 1 by 2 on the right hand side as well. So after you introduce it to both sides, what you'll be left with is 1 by 2 mv squared is equal to, this 2 is just going to multiply with r, so gmm divided by 2r. ठीक है. This is kinetic energy, so ek is equal to gmm divided by 2r, and that is how you prove this expression. उसके बाद the next part is the satellite has mass 620 kgs and is initially in a circular orbit of radius 7.34 into 10 power 6.
So this bigger orbit is our initial orbit, and there's a new orbit जिसका radius थोड़ा छोटा है, and they've given us the small mass 620, which is the mass of the satellite, ठीक है. And what they've asked us is कि the resistive forces cause the satellite to move into a new orbit of radius 7.30 into 10 power 6. Determine for the satellite the change in kinetic energy, ठीक है. तो if we use the normal formula for kinetic energy, which is 1 by 2 mv square, ठीक है, हम इसको तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि we don't have the velocity. लेकिन we just proved कि हमारा जो है ना kinetic energy का formula ये है, ठीक है. We derived this in the previous part. So we're gonna be using this formula, gmm divided by 2r. So kinetic energy is equal to gmm divided by 2r, and we have the values of the two radiuses, ठीक है. And gm, we don't know the mass of this planet, but we do know the value of gm क्योंकि वो उन्होंने हमें question में mention की हुई थी. It's right over here. gm is 4 into 10 power 14. So now all we need to do is plug the values into the formula, and that is going to be, ठीक है, 4 into 10 power 14 times the smaller mass, which is 620, ठीक है, 620 kilograms. This is mentioned over here, and what we need to do is we just need to divide these, the product of these two, क्योंकि हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. और हम ना दो रेडियसेस को बारी बारी लिख के माइनस करने के बजाय वी कैन जस्ट डायरेक्टली सबट्रैक्ट द रेडियस, क्योंकि बाकी चीज़ें ना द रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज द सेम. तो व्हाट वी आर गोना डू इज 7.34 into 10 power 6 minus 7.30 into 10 power 6. So it's gonna be 7.34 into 10 power 6 minus 7.30 into 10 power 6. It's already in meters, so we won't really need to convert it into from kilometers क्योंकि इस केस में हमारे पास डायरेक्टली मीटर्स में. And when you solve this, ठीक है, you'll get the answer for the change in kinetic energy. Let me quickly put the values in. This is gonna be equal to 9.26 into 10 power 7. 9.26 into 10 power 7 joules. 9.26 into 10 power 7 joules. Okay. And for the next part, they've asked us the change in gravitational potential energy, ठीक है. तो for this part हमारे पास we have the change in heights, right? हमारे पास दो ऑर्बिट्स के डिफरेंट है, so we डिफरेंस है, तो we can calculate delta h के change in height क्या है, change in radius क्या है. And we can use again, अब इसमें वही बात आ जाती है, you need to know these formulas, और इन formulas के through you can just calculate them. gm का उन्होंने हमें दिया हुआ है product, ठीक है, which is 4.0 into 10 power 14, and we just need to multiply that by our small mass and then divided by the change in height, ठीक है, and that's gonna give us the value of, so the formula we're using is gravitational potential energy का direct formula, so it's minus gmm divided by r, minus g mm divided by r. इस वाले पोर्शन की वैल्यू गिवन है इधर ऊपर हमें दी थी अगेन 4 into 10 power 14. So it's gonna be 4 into 10 power 14 times the small m, which is 620. So 620 divided by again the change in radiuses. So that's gonna be 7.34 into 10 power 6 minus 7.30 into 10 power 6. And let me just calculate this. So this is going to be equal to 1.85
It's 1.85, 1.85 into 10 power 8 joules. So change in potential energy is 1.85 into 10 power 8 joules. That's it for this question. अच्छा नहीं एक और भी. Use your answers in part 2 to explain whether the linear speed of the satellite changes, decreases or remains unchanged when the orbit decreases. अच्छा तो हमने देखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है ना वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. अच्छा अब इन दिस केस हमने तो इधर साइन को प्रेफरेंस नहीं देखना, वी जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेटेड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन इफ़ वी लुक एट द डायग्राम ओवर हियर, ठीक है, हमारा जो रेडियस है ना वो डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. एंड बिकॉज योर रेडियस इज डिक्रीजिंग, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो डिक्रीज करिए. जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करिए. एंड इफ़ वी लुक एट आवर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है ना इन दिस केस वो छोटा हो रहा है. ठीक है. 2r, द डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग. तो इट्स सिमिलर टू योर काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन जहाँ पे whenever you had a decreasing gravitational potential energy हमारी kinetic energy increase करती थी. ठीक है. तो in this case all you need to write is कि change in kinetic energy is positive, hence as the radius of the orbit decreases, speed of satellite increases. उसके बाद we're gonna look at the next question. State what is meant by a gravitational field. अच्छा, for this we just need to write down the definition of a gravitational field. Gravitational field हमारे पास ये थी कि any space जहाँ पे ना we had gravitational field lines ना, और gravitational field lines affect masses. ठीक है. तो wherever a mass feels a force, ठीक है, that is called a gravitational, that is where you have a gravitational field. So it इसकी definition होगी a region of space where mass experiences a force. उसके बाद they've given us a table with the radiuses of two orbits, Earth की orbit और Jupiter की orbit. I believe this is going to be around the sun. In the solar system, the planets may be assumed to be in circular orbits around the sun. The data for the radii of the orbits of the Earth and Jupiter about the sun are given. ठीक है. And again, this is given in kilometers. तो जब हम इसको जब भी use करेंगे, we're gonna be multiplying this value with 10 power 3. So if we just add it, हमने in numbers को multiply करना होगा 10 power 11 से. ठीक है. So 10 power 8 is gonna turn into 10 power 11. State the Newton's law of gravitation. Okay. Again इसमें ये था कि the force, gravitational force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of separation between the point masses. Use Newton's law to determine the ratio.
Okay, they've given us the ratio. Gravitational field strength due to the sun at the orbit of Earth. So we have the orbit of Earth on in the numerator and the orbit of Jupiter in the denominator. And हमने इसको यूज करना है ना, तो since it is inversely proportional to the radiuses जो जिन्होंने radius की वैल्यू उन्होंने ना हमें ऊपर दे दी है, तो all we need to do is हमने इन radiuses की जो values है ना, इनको यूज करके we need to put them in this formula. inversely proportional है, तो अब होगा क्या कि orbit of Earth, तो that's gonna be 1.5 into 10 power 8. ठीक है, अभी हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, तो we're just using ratios, right? तो इसको हम directly 10 power 8 कर सकते हैं. You don't really need to convert it. ठीक है, it's gonna cancel out anyways. ठीक है, inversely proportional, so it's gonna be 1 divided by 1.5. This is for the orbit of Earth, and we're gonna be dividing this by 1 divided by 7.78. So 7.78 into 10 power 8. So this is gonna be, अच्छा हाँ नीचे भी ना, it's gonna be 1 divided by 7.78. It's gonna be 1 divided by 7.78 into 10 power 8. अब इससे हो क्या रहा है कि if you write it like this ना, ये reciprocal हो जाएगा. If you write it like this, 1 divided by 1.5, ठीक है, 10 by ये दोनों cancel हो रहे हैं. ठीक है, all we're left with is 1.5 and 7.78. तो if you look at it like this now, ठीक है, 1.5 divided by 1 divided by 7.78, इसको reciprocal करेंगे, so it's gonna be multiplying now, तो 7.78 ऊपर आ जाएगा, and हमने बस इनका रेशियो निकालना है, and that is going to be 7.78 divided by 1.5. अच्छा हाँ, इनको हमने स्क्वायर भी करना है. I forgot the square. हम orbit of since it is directly proportional to the square of radiuses, right? हमने इनको पहले स्क्वायर भी करना होगा, तो 1.5 स्क्वायर और 7.78 का स्क्वायर, so that's gonna be 26.9. 26.9, we can round this off to 27. The orbital period of Earth about the Sun is T. Use the ideas about circular motion to show that the mass m of the Sun is given by m is equal to 4 pi square r cubed gt squared, where r is the radius of the orbit about the Sun and g is the gravitational constant. Explain your work. अच्छा, तो for this we need, हमने देखना है कि अगेन हमारे पास ना जो दो फॉर्मूलाज है ना, which link circular motion and gravitation. ठीक है, gravity, ठीक है, जो हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, इट इज द फोर्स फार्मूला, सो इट्स गोना बी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी. अब बस हमने देखना है कि what specific value are we going to use. ठीक है, which gravity का तो formula is always going to be the same. हमने देखना है कि what is going to be the formula for the circular motion जो हम use कर सकते हैं ना. For that we can use any formula जिसमें हमें ना पाई मिल रहा है. ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पाया है, तो फोर्स में, अच्छा इसमें पाई नहीं है, लेकिन इसमें ओमेगा स्क्वायर है. ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर को हम, ओमेगा स्क्वायर और एंगुलर स्पीड, राइट? तो फॉर अ कंप्लीट ऑर्बिट, अगर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, फॉर अ कंप्लीट ऑर्बिट हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी. इफ़ यू गो बैक टू आवर क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पे टी भी था, तो हमारे पास पाई भी आ रहा है और टी भी आ रहा है. सो दिस इज़ द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़. इट्स गोना बी एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ओमेगा की जगह we're gonna plug in 2 pi divided by t, so it's gonna be m r times 2 pi divided by t. It's just gonna be m r 4 pi square divided by t. तो
this is the formula we're going to use, mr 4 pi square divided by t. So it's gonna be mr 4 pi square divided by t square, data square, यहाँ पे भी square आएगा. We're gonna equate this to the force of gravity, which is gm m divided by r squared. अच्छा, you can see the m cancels out. हमने m को formula बनाना है, ठीक है. This m over here, it's gonna be the formula for it's gonna be the subject of this formula, ठीक है. This equation हमने m को equate करना है, तो we're just gonna move everything to the other side. अब r square इधर है, ठीक है, तो इधर जाके it's gonna multiply. तो once it multiplies with this r, ठीक है, let me change the pair with this r, it's gonna be r cube. तो that is हमारे पास जो न्यूमरेटर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, it's gonna be r squared times r, that's gonna be r cube, ठीक है. 4 pi squared वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है. एंड अब डिवाइडेड बाय हमारे पास टी स्क्वायर था, ठीक है, और हमने जो इस जी को है ना इधर ला के डिवाइड करना होगा. जस्ट बेसिक रीअरेंजमेंट, जी हमारे पास नीचे आ गया एंड विल बी लेफ्ट विद एम ऑन दिस साइड, ठीक है. तो नाउ इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला, अच्छा, r is the radius of the orbit, right? तो यहाँ पे जो हमारे पास radius है ना, it's gonna be capital R. We can r की जगह small r, it's just a variable, right? You can change it to capital R. तो यहाँ पे हमारे पास capital R आ जाएगा. And now if we compare our formulas, m is equal to 4 pi square r cube divided by gt square. So that's how you would derive this formula. अच्छा, next part, the orbital period t of the earth about the sun is 3.16 into 10 power 7 seconds. अच्छा, हमारे पास directly seconds में, we won't need to change it. The radius of the earth's orbit is given in figure 1.1. Use the expression in part 1 to determine the mass of the sun. अच्छा, तो हमने mass of the sun निकालना है and we just need to plug the values into this formula. 4 pi squared, ठीक है, and r cube. तो r जो था ना हमारे पास, it was over here, radius of the earth, 1.5 into 10 power 8, and this was in kilometers, so it's going to be 1.5 into 10 power 11. So that's going to be 1.5 into 10 power 11, and we're not going to forget the cube over here, so that's going to be cubed divided by g, which is the gravitational constant, 6.67 into 10 power minus 11, and that's multiplying with our time period ka square. So our time period is 3.16 into 10 power 7, so it's gonna be 3.16 into 10 power 7, and this is being squared, okay. Let me just calculate it. So this is equal to 2.0 into 10 power 30 kg. That's going to be our answer. That's the next part. Explain what is meant by a geostationary orbit. अच्छा, a geostationary orbit में हमने जब देखा था ना, it was an orbit जिसकी speed of rotation जो है ना, it is the same as the speed at which the earth revolves around itself. तो from an observer on earth, वो orbit हमेशा आपके ऊपर ही रहेगी, it's gonna be stationary. That's why it's called a geostationary orbit. तो from earth, ठीक है, it's the satellite appears stationary, ठीक है. Another इसको हम एक्सप्लेन के साथ करेंगे कि हमारे पास जो अर्थ की रोटेशन है ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है. फॉर अस इट्स 24 आवर्स, ठीक है. सिमिलरली हमारे पास हर ऑर्बिट का भी एक टाइम पीरियड होता है ना. तो अगर हमारी अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड और हमारी ऑर्बिट का टाइम पीरियड जो है ना सेम हो जाए, सो बोथ ऑफ देम आर 24 आवर्स, हमारी जो सैटेलाइट होगी ना, इट्स गोना बी जियोस्टेशनरी बिकॉज इट्स गोना बी मूविंग रिलेटिव टू द अर्थ, इट्स गोना बी revolving at the same speed, not the same speed, but it's gonna appear to be stationary. अच्छा, तो इसके अंदर we need to write के यहाँ पे ना, अच्छा, and it's जो इसकी orbit का जो
it needs to orbit around the equator. मतलब आपका जो equator line नहीं बनती, ठीक है, throughout the diameter उसने पूरा मतलब अर्थ का proper चक्कर लगाना होता है, तो it's uh, uh, an orbit above the equator uh, in the uh, where the satellite moves in the same direction relative to the Earth's rotation with the same time period. 3 marks का है, so you need to make sure कि आप equator को mention करो, same direction relative to the Earth's rotation और time period, ठीक है. So equator, direction और Earth's rotation. उसके बाद they've given us another formula. A satellite of mass m is in a circular orbit about a planet. Circular यहाँ पे which means circular motion को हम use करेंगे. The mass of the mass m of the planet may be considered to be concentrated at its center, so that the radius of the orbit of the satellite is given by the expression r cube is equal to gm t squared divided by 4 pi squared, where t is the orbital period of the satellite and g is the gravitational constant. अच्छा, अब ये वाली एक्सप्रेशन देख के हमें पता चल रहा है कि हमारा जो फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था ना, इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग इन दिस केस. अब फ़र्क क्या है कि हमारे पास ना आर क्यूब जो है ना, दैट इज़ आर सब्जेक्ट, ठीक है. लिटरली हम इसको अभी से ही रीअरेंज करेंगे ना, तो द प्रीवियस स्टेप्स आर ऑल गोइंग टू बी द सेम. आर क्यूब को अगर हमने सब्जेक्ट बनाना है, इसका ना बी जी टी स्क्वेयर इधर आके एम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी एम टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, और 4 पाई है ना, इट्स कैन डिवाइड, तो 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 पाई क्यूब 4 पाई स्क्वेयर. तो दैट्स द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग हियर. आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वेयर. तो इसका भी ना वही हमने जिस तरह फॉर्मूला नहीं इधर बनाया था, we converted this, added pi to it, mr 4 pi squared divided by t squared. That's the same formula we're going to use. It's just rearranged differently. और इसके marks भी ज़रा ज़्यादा. So just repeat the maths in the previous part जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है. It's gonna be the same. Formula भी same है, it's just rearranged differently. The Earth has a mass of 6.0 into 10 power 24. Use the expression given in B to determine the radius of the geostationary orbit about the Earth. तो अब इन्होंने ना हमें बता दी है कि Earth का mass कितना है. तो अब if you look at this specific formula, हमारे पास constant कौन से हैं? G is a constant, 4 pi square is a constant. So the only variables in this specific formula are m and t, ठीक है. m and t squared. m की वैल्यू इट्स ओवर हियर, t स्क्वायर की वैल्यू वी डोंट नो. t स्क्वायर की वैल्यू हम किस निकालेंगे? इन्होंने पूछा कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अबाउट द अर्थ, उसका रेडियस हमने निकालना है ना. तो अबाउट द अर्थ अगर हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की को कंसिडर कर रहे हैं, उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 24 आवर्स, बिकॉज दैट्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द अर्थ टू रोटेट one complete rotation, to finish one complete rotation about its axis. So all we need to do is r cubed is equal to, we're gonna start plugging in the values. It's a 24 hours, but again you have to convert it into seconds before using this formula. It's gonna be 6.67 into 10 power minus 11 times 6.0 into 10 power 24. It's in kgs, so हम directly इसको use कर सकते हैं. 6.0 into 10 power 24 kilograms times t squared. So t is going to be 24 hours in a day into 60 minutes in every hour into 60 seconds in every hour. So it's 24 times 60 minutes times 60 seconds. That's going to convert your value for hours into seconds. And उसके बाद
again, you're gonna make sure you don't forget the squares. Divide all of this by 4 pi 4 pi square. ठीक है, let me calculate it. इससे मेरे पास क्या आ रहा है 7.57 into 10 power 22. अच्छा, okay, so this is our cube की value ना. We need to take a cube root of this as well so that we get a value of r, and that's gonna be cube root answer. That is 4.2 into 10 power 7. 4.2 into 10 power 7 meters. That is going to be our answer. 4.2 into 10 power 7. So if our orbit was geostationary, this is going to be the radius of that orbit around the earth. ठीक है, define gravitational potential on a point. अच्छा, इसके बाद just practice some more questions. ठीक है, and let me know अगर कोई question हुआ ना जिसमें show off, we can solve it together inshallah. Okay, take care, Allah Hafiz.